इस फैन को रिचार्जेबल करने के लिए इसमें 775 डीसी मोटर लगाऊंगा। इस पंखे में जो मोटर लगाने का जगह है वो काफ़ी बड़ा है, लेकिन 775 डीसी मोटर बहुत ही छोटा है। देख सकते हो ये डायरेक्ट फिट नहीं होगा। इस पंखे में 775 डीसी मोटर फिट करने के लिए पीवीसी पाइप का बीच में 775 डीसी मोटर का साइज का हिसाब से एक होल किया हो। मोटर को थोड़ा सा पीवीसी पाइप का अंदर की तरफ फिट करना होगा, इसलिए मोटर के ऊपर जो कवर लगा हुआ है उसको निकाल लूंगा। गाइस देख सकते हो मोटर काफी बढ़िया से फिट हो गया है। पीवीसी शीट का अंदर से मैंने मोटर को निकाल दिया हो, क्योंकि पहले इस पीवीसी पाइप का शीट को बढ़िया से इसका फ्रेम से स्क्रू से कसना होगा। पीवीसी पाइप का शीट को इसका फ्रेम में बढ़िया से स्क्रू की मदद से कस लिया हुआ। अब इस मोटर को ग्लू से चिपका लूंगा। मोटर को मैंने काफ़ी बढ़िया से चिपका दिया हुआ। अब फटाफट से इसका कनेक्शन कर लेते हैं। इस पंखे का स्पीड कम ज़्यादा करने वाला इस रेगुलेटर को निकाल लूँगा, क्योंकि ये रेगुलेटर ख़राब हो चुका है।
गाइस ये पंखा बन के तैयार हो चुका है। यहाँ पर मैंने 2 फीमेल सॉकेट लगाया है 5 वोल्ट का। इन दोनों सॉकेट से बैटरी चार्ज हो जाता है, देख सकते हो। तो ये पंखा आपको कैसा लगा कमेंट करके बताना। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर देना।